So before starting to the AC generator, we will try to understand little about Fleming right hand rule. Okay, so I am trying to make you understand how this rule works and what is the speciality and physical significance of this rule. Okay, so just see over here, this is the right hand. Okay, so I have just simply take a figure of my, this is my own hand, so just take a figure of right hands and paste it over here so that you can better understand the principle of Fleming's right hand rule. So see, listen carefully, what is the why this rule has been given. So the brief about this rule can be summed up or can be summarized up in this form. इसको अगर समराइज करें तो इस फॉर्म में, सो ये बेसिकली इट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इट वर्क्स बेसिकली this Fleming's right hand rule is for electromagnetic induction. Electromagnetic induction means the electricity is induced in the conductor because of the magnetic effect. So see over here, there are two poles has been shown. So these are the pole of a horseshoe magnet. So this is the north pole and this is the south pole of a magnet. So it is quite obvious that the field line flows from the north pole towards the south pole. So this is the field line that is showing by the arrow, black arrowheads. So the field line is emerging from north poles and it gets terminated at the south pole. Okay, so north pole towards south pole. What Fleming has just sum up the occurrence in the left right hands. So just try to understand how this right hand is applicable in this occurrence or in this phenomena of the producing or induction of the electric current. See, this is the thumb. So thumb is just points towards the force. This thumb is points towards the force. So this thumb is points towards the force, and this index finger is points towards the field. Field means magnetic field. Field means here field means magnetic fields, and this middle fingers that is here in this particular figures towards my face. So this directions means the direction of flow of electric current. So direction of flow of electric current. So the Fleming says that if there is a force in the conductor, remains perpendicular to the magnetic fields, the current flows or current induced in the conductor will be in this direction, or the flow of current in this direction. Try to understand the principle with these figures. ठीक है? So यहाँ देखिए, I have just placed in this board, there are two poles of a magnet, north pole and south pole. So try to understand little how this phenomena is working. See, this is the north pole and this is the south pole. Magnetic field, these black arrowheads, these black arrows, there are 4 black arrows, and these arrows is showing the directions of magnetic field lines. These 4 black arrows is showing the direction of magnetic field line. So magnetic field lines is emerging from the north pole and it gets terminated at the south poles. And in between these two, suppose we have placed, this is the conductor, this is the conductor, and this is also one kind of conductor. This is generally used in the generator, and if the conductor is made in this shape and it is forced to rotate,
either clockwise or anti-clockwise, the structure is said to be a armature. This structure is said to be a armature. So this is basically a armature, and it is forced to rotate. Who will force this rotate? So at the back of this armature, we generally connect a motor that is called a prime mover, or any other like a diesel engine or a petrol engines. You can connect the shaft of the diesel engine with the shaft of this armature so that it can take a rotation. Now, without taking a rotations, just we are trying to understand how this force and fields induce the current, how the force and field of a magnets induce the current in the conductor. So first I am coming to force, then field, then current will finally induce. So first we apply force in a magnetic field, and in result the current will flow through the conductor. So just come with here and just try to understand my lecture. See, suppose this is the position 1, this is the position 1 of this violet color, whatever this is, bluish color. This is also a conductor. Suppose this is a conductor, this is a conductor, and this conductor is forced to move in the upward directions. So this conductor is forced to move in the upward direction. So this is the position 2 of the same conductor. Okay. So this conductor P1, sorry, this conductor, the position of conductor is moving from the lower to upward direction. So this is the direction of force. This conductor is having a mass. This conductor is a physical object. So if you want to replace or shifting the position of a conductor, obviously it requires a force. So this magnitude of force, you are applying a force in this direction, in the direction of thumb direction. So thumb points toward the direction of force. So obviously we will apply the force in this direction, means in the direction in which the conductor is getting placed. So the direction of force will be the direction of the motion of the conductor. Okay, so this conductor is moving just upward. So the direction of force is this much. Now, so here in this particular figure, the direction of force means direction of thumb is the direction of force over here in the conductor from P1 to P2. In result, what is happening? And this direction is the field line. So this is field line. Field line is emerging from north poles and it is terminating at the south pole. So this is the field line direction. So this index figure is the field line. So in this field line and in this force, means force कहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है और field line north से south की ओर जा रहा है. So in result, what will happen? The current will flow in this direction. Na? Current will flow through the direction of pointing towards the middle finger. So current कैसा flow करेगा? इधर की ओर flow करेगा. So in result, what will you see? What will you see over in the conductor? We will observe that the current will flow in this direction in the conductor due to the motion of a conductor from below to upward, or you can say in the upward directions. The movement of a conductor is upward directions, and in result, we feel the observation, or we feel the effect of the flow of current from this side to this side because of the direction of our finger. So these three fingers showing the three directions. This is the force directions. So this is the force direction over here. These three fingers showing the directions. This thumb direction is the force direction. This thumb direction is the force directions. This index finger showing the field direction. So this is the field. So this is the field. This is the field. And in results, if it is so, if these two things is true, means force is in upward directions and field is in this direction. So obviously the current will flow in this direction as per the Fleming's rule. So this is all about the Fleming's right hand rule. This is all about the Fleming right hand rule. So यही है Fleming right hand rule. Now you can try to apply the same phenomena over the armature of a generator. So ये क्या है? ये है generator का armature. अब if you try to rotate it,
in the counterclockwise directions of this armature, what will happen? This portion of the armature means, this portion means, suppose this is a AB, so AB portion of armatures will experience in the upward direction movement, and CD portion of the armature will experience a downward motion, because of the rotation of armature in counterclockwise direction. So this portion will go down and this AB will go up. Okay, so in the AB or in the AB conductor, the flow of current will be similar like this, like the previous example. So the flow of current will be from A to B, but see, at the same time, since it is rotating, so at the same time the conductor CD will move in downward directions, and in result the current will flow in the opposite to the AB, this direction. So finally current will move like that from here to here and from here to here, and we can finally connect these two terminals with any load like a bulb or anything. Okay, so we will discuss later. Just इसी स्लाइड में थोड़ा सा, जैसे इस स्लाइड में इसके आगे जो टॉपिक शुरू होगा वो क्या होगा, एसी जनरेटर। तो यहाँ तक ये क्या है, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। यहाँ तक क्या है, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये है आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड, ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट सेशन का कंटिन्यू है, इसी वीडियो में है, लास्ट तक वीडियो को देखिए और उसमें आपको एसी जनरेटर जो है सो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या लिए, ये मैग्नेट है, नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये है, और यहाँ पर हम लिखे हैं कि वन परमानेंट मैग्नेट इज टेकन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब इस आर्मेचर का नाम देते हैं आर्मेचर ABCD, आर्मेचर A B C एंड D, और लिखते हैं यहाँ आर्मेचर ABCD is placed in the gap provided in between North Pole and South Pole of the magnet, So we have taken ABCD. This is the armature ABCD, and that is placed in the gap provided in between the North Pole and South Pole of the magnet. Now, this armature, under bracket A, B, C, D is connected with प्राइम मूवर हटा दो, तुम्हारे 10th लेवल से गड़बड़ हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, विथ डीजल इंजन और any other kind of engines, to make
armature ABCD to rotate armature ABCD in either clockwise or anti-clockwise direction. Let's assume that the rotation of armature is क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज करें एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लॉकवाइज करते हैं, हम लोगों को सीधा होगा इज क्लॉकवाइज। इधर भी बात एंटी क्लॉकवाइज रहने दो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब देखो यहाँ लिख लिया, इस पार्ट को लिख लो, इसको पहले इसको लिख लो, और उसके बाद ये जो बीसी पोर्शन है, यहाँ से एक वी कनेक्ट अ शाफ्ट, दिस इज अ शाफ्ट एंड दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड विद द मोटर, यहाँ लिख दो शाफ्ट, शाफ्ट कनेक्टेड टू इंजन, शाफ्ट कनेक्टेड टू इंजन। तो क्या हो गया, ये शाफ्ट जो है सो डीजल इंजन या फिर किसी और जो पेट्रोल इंजन है या किसी एनी अदर काइंड ऑफ प्राइम मूवर्स, उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये रोटेट करेगा। हमने कैसा एजम्पशन लिया है, हमने लिया है लेट्स एज्यूम दैट द रोटेशन ऑफ आर्मेचर इज एंटी क्लॉकवाइज, so let's assume that the rotation of armature is anti-clockwise, means obviously this way, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, लिख लिया, हाँ लिखो लिखो, लिखो लिखो लिखो, लिखो इसको। लिख लिया, ईशान, यस सर, लिख लिया। ठीक, अभी जो है सो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दिस शाफ्ट, इसका भी कुछ नाम दे दें, चलो इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, आप चाहे रहने दो, इसको कोई मतलब नहीं है, लिख दिया ना, शाफ्ट कनेक्टेड टू द इंजन, ठीक है।
और एक एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है सिंबल में। अभी क्या होगा, यहाँ इसको मिटा दो, इधर ही लिखूं क्या कि अच्छा यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, फिर सब मिटाऊंगा हल्का सा, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, बाकी कंस्ट्रक्शनल फीचर में। उसके बाद क्या है, पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं एक स्लिप रिंग का, तो इसके अंदर ही कर देते हैं, एक स्लिप रिंग को इसके अंदर घुसा देते हैं, और ये स्लिप रिंग को ये हमेशा जो है, ओहो ये घूमते 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 ऐसे तो घूमेगा ना, गड़बड़ी है। हाँ, जो भी बनेगा ऐसा ही बनेगा। स्लिप रिंग, एक स्लिप रिंग बना, और ये स्लिप रिंग से ये कनेक्टेड है ऐसे, सॉरी ये स्लिप रिंग से ये कनेक्टेड है ऐसे, और फिर एक और स्लिप रिंग बनाते हैं इस कंडक्टर से यहाँ, और ये स्लिप रिंग से ये कनेक्टेड है, ये स्लिप रिंग से ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या है, दो स्लिप रिंग है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, और ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी है स्लिप रिंग। ठीक है, सो यहाँ लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन फीचर में ही, two slip rings, two slip rings are attached, are attached to the conductor, to the conductor AB and CD as shown in the figure, as shown। ये भी है कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। फिर यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा सा लिटिल कार्बन ब्रश के बारे में। टू कार्बन brushes, two carbon brushes are connected to the slip ring, to the slip ring with little pressure, so that it can slide over the slip ring। लिख लिया, थोड़ा सा और बच गया, उसको लिख लेते हैं। ये क्या है, ये है गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, यह है गैल्वेनोमीटर।
थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके कंटिन्यू है, ये कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है। इसके बाद इसको डिलीट करेंगे। तो two terminals of galvanometer nanometers are connected to the carbon brushes to verify the flow of इलेक्ट्रिक करंट। फटाफट नोट डाउन करो। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन फीचर यहाँ तक। समझ में आ रहे हैं ना? यस सर, समझ आ गए। ईशान, यस सर। नोट डाउन कीजिए तो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल में बढ़ेंगे, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल होगा। वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ लिखते AC generator works on the principle of on the principle of Fleming's right hand rule. Fleming right hand rule. AC generator works on the principle of Fleming right hand rule. ठीक है। In this figure, it is evident that the magnetic field lines moves from north pole to south pole, north pole to south pole, ठीक है। So magnetic field lines moves from north pole to south pole. So just we are trying to take a lighter tone figure from north pole to south pole. So from north pole to south pole. So this is the magnetic field lines. So magnetic field lines moves from north pole to south poles. As per the construction of as per the construction armature AB, conductor AB it tends to move downward, whereas
whereas CD is काट दो, ये नहीं होगा, CD tends to move upward since the armature is rotating in counterclockwise direction. Counterclockwise direction. So as per the Fleming's right hand rule, the current will flow in the conductor AB from, ये फ्लो करेगा, दायां हाथ है ऐसा, ये हो गया ऐसा, और ये घूम रहा है ऐसा, ये हो गया ऐसा, फुल लाइन गया इधर, और ये गया डाउन, ये गया B to A होगा, और B to A. So from B to A and in CD from D to C, in CD from C to D. So in AB from B to A, here from B to A, and here from C to D. So B to A and C to, sorry, हाँ D to C, ठीक है, B to A and C to D, ठीक है, इस तरह से यहाँ से आया, कार्बन ब्रश है, ये इधर गया, और फिर चूंकि ये रिटर्न हो रहा है यहाँ से कार्बन ब्रश में, ये इधर गया, ठीक है. So this is the flow of current. After 180 degree of turn, 180 degree of turn, the conductor AB will be in the place of CD, and hence the direction of flow, the direction of
the direction of flow of current will reverse and same occurrence will happen to conductor CD. Will happen to conductor CD. So this way, so this is the way to produce alternating current. चलो लिख लो, हो गया। आप ये जो फिगर ड्रॉ किए हैं हम, ये फिगर आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर चाहो तो एक और सिंबल निकाल के ऐसे लिख सकते हो कि ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एग्जामिनर को खुश करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड।